So that was the last thing that we were doing. We were talking about acids. ठीक है, we were talking about acids और हमने acid और bases हमने उसकी importance पढ़ी थी कि मैंने बताया था कि acids are molecules that produce H plus ions. They start giving away H plus ions. ठीक है, कोई भी इर्द गिर्द होगा उसको H plus one पकड़ा रहे होंगे. And bases, on the other hand, are the ones that accept H plus ions. And I had told you why it was important. I told you that water is important. Water is important for planet Earth, or water breaks up into H plus one and OH ions. Usually they're equal in quantity. That's called neutral. That's called pH 7. Acid dal doge, so the amount of H plus one would increase. Acid is a molecule that produces H plus one ions, and base is a molecule that accepts or gains H plus one ions. So H plus one ions की quantity जो है वो कम हो जाएगी पानी के अंदर, ठीक है? और so there are different types of water. और हर जगह वाटर है, ठीक है, आपके सेल्स ब्लड के अंदर, आपका प्लांट्स के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज वाटर. So every reaction, water is the main medium, and every reaction is dependent, and every reaction has a preference. Some prefer neutral conditions, some prefer acidic conditions. They require more H plus one ions in the water. Some prefer basic conditions. They require more OH ions and less H plus one ions. ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था, और acids के हमने formulas last time हमने discuss किए थे. Now, these formulas, they have to be remembered. Not only that, you must also remember कि what ions make up these. Formula तो बनता था, वो crisscross करके बनता था. So not only do you need to remember the formulas, what you also need to I said, not only do you have to remember the formulas, you also need to remember what ions make up. क्योंकि जब आप crisscross करते हो ना, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, मतलब H2SO4 के अंदर जब when you do crisscross ये numbers change हो जाते हैं, ठीक है. So it's actually H plus 1 and SO4 minus 2. You do crisscross, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 H plus 1 होंगे, एक SO4 होगा. तो end result is you get H2SO4, ठीक है. So you must remember not only the formulas, but you must also know okay, what ions make up these compounds. So for example, you have H3PO4. So if you have H3PO4, what's going to happen is, can H3PO4 molecule, but reverse पता होना चाहिए कि H3PO4 molecule, that's a phosphoric acid molecule. What it would do is that it would produce 3 H plus 1 ions and 1 PO4 minus 3 ions if you mix it in water, ठीक है, in aqueous state. It's going to produce these H plus 1 ions. Any other acid, for example, you have H2SO4. ठीक है, acids, they release H plus 1 ions, H2SO4. So you must know that if you put it in water or any place, it's going to release 2 H plus 1 ions and 1 SO4 minus 2 ions. So you must know कि ये जो acids है ना, ये जब when they dissociate, तो ये कौन से ions produce करेंगे, ठीक है. Hamza, is this clear? Noor, is this clear? Rafi, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, now acids तो हमने कर लिए. The next thing is, what are bases? So bases are which compounds? Bases were the ones that accept H plus 1 ions. Now, there are 3 types of compounds that actually do that. 3 different types of compounds. One is any compound that has O minus 2 ion in it. If it has O minus 2 ion in it, O minus 2 ions, they like to accept H plus 1 ions. And they like to form water, ठीक है, by accepting H plus 1 ions. So that's any compound that has O minus 2 in it, or any compound that has a hydroxide in it. That does the same. It likes to accept H plus 1 ions.
and it likes to form water as well. ठीक है, so now O minus 2 ions अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब every negative ion has a positive ion next to it. ठीक है, OH minus 1 भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, there's going to be a positive ion next to it. Positive ion किसके होते हैं? मेटल के होते हैं. So it's either metal oxide. ठीक है, मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि इट्स आइदर कोई पॉजिटिव आयन होगा ना साथ O minus 2 के. ठीक है, Na+1, so the formula would be Na2O, या फिर it would be Mg and O minus 2 and Mg would be +2. ठीक है, so it would be MgO. So metal oxides are bases, anything that has oxygen in it, or metal hydroxides are bases. Well, hydroxide ion भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव आयन ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव आयन नेक्स्ट टू इट, सो Na+1, OH minus 1, or Ca+2 and OH minus 1. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It's going to be OH twice. ठीक है, so metal oxides, these are your bases. Metal oxides and metal hydroxides are your bases because they are capable of accepting H+1 ions. Whenever you have an O minus 2 ion, तो ये H+1 डालोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो O minus 2 है ना, वो H+1 अपने साथ जोड़ लेगा and it would form water. And the same would be done by OH minus 1. ठीक है, नूर clear है? Hamza, Abdullah, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. चलो ठीक है. And then there's another base which is slightly weakly basic. And that is, इसके नीचे ही कर लेते हैं. The third one is कि carbonates. अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड और इसमें एक हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कर लेते हैं. Ammonium hydroxide, NH4OH, क्योंकि only NH4+1 है और OH minus 1 है. ठीक है, so that's also a base. Metal hydroxide, add ammonium hydroxide to the list. अच्छा, इसको एक सेकेंड. अच्छा, the third one is metal carbonates are weakly basic. अच्छा, और इसमें मेटल का कोई काम नहीं है. It's carbonate that we are talking about. ठीक है, कार्बोनेट इज CO3 minus 2. मेटल तो साथ वैसे ही अटैच्ड है कि नेगेटिव आयन अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा एक पॉजिटिव आयन होता है. सो carbonates are also capable of accepting H+1 ions. What happens in a carbonate is, मैं थोड़ा सा डिटेल में, ऑल्दो ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, what happens to a carbonate is कि ये कार्बोनेट का आयन होता है. ठीक है, जब H+1 आता है ना तो, और दो H, अच्छा, when H+1 comes along, two H+1 ions. So what happens is कि the oxygen in carbonate accepts the H+1 ion and it ends up forming water molecules. ठीक है, वो water बन जाता है और पीछे रह जाता है कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ, तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, that is what is left behind. But H+1 oxygen in the carbonate ion accepts the H+1, ends up forming ये ऊपर equation लिख लेते हैं, it ends up forming carbon dioxide and water molecules. ठीक है, hopefully you get the idea. मैं एक दफा फिर explain कर दूं कि this is the carbonate ion, this is what it looks like. तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो -1 पार्ट है ना, that वो H+1 को अपने साथ अटैच करता है और वाटर बना देता है, और पीछे क्या रह जाता है, कार्बन और दो ऑक्सीजन रह जाते हैं, वो आपस में डबल बॉन्ड्स बना के अपने बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं, they end up forming carbon dioxide. ठीक है, so in this way carbonate ions are also capable of accepting H+1. मतलब सोल्यूशन में H कार्बोनेट डालोगे ना तो वो H+1 अपने साथ जोड़ना शुरू कर देगा और ये बनाना शुरू कर देगा.
So it is accepting H plus 1, it's acting as a base. Base यही काम करते हैं, ठीक है? Is this clear? Rafik, clear है? Hamza, Yes, sir. Yes, Abdullah, sir. clear? अच्छा, so three compounds. So three compounds. मैं थोड़ा सा ना वो डिटेल में जरा जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए. रिमेंबर ये चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट यू जस्ट नीड टू नो इज दीज थ्री थिंग्स जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ कि व्हाट आर बेसिस. मतलब ये वैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्वियसली इट हेल्प्स कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू दे एक्सेप्ट H plus 1 ions. So metal oxides, metal hydroxides and metal carbonates plus include ammonium as well. पॉजिटिव आयन का कोई काम नहीं है इसमें. जस्ट मैं पॉजिटिव आयन वैसे ही साथ जुड़ा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है. इट्स द कार्बोनेट. मैं उनको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ. जो एक्चुअल बेस है ना, विच इज एक्टिंग एज अ बेस, it's the oxide, it's the O2 minus ion, or it's the hydroxide which is -1, or you're talking about the carbonate. These are your actual bases. वो पॉजिटिव आयन साथ जो मर्जी जुड़ा हो, ठीक है, that doesn't really matter. तो ये तीन बेसिस होती हैं, ठीक है. तो मैंने भी उसी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, और मेटल की जगह अमोनियम भी हो सकता है, दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव आयन. तो दीज आर बेसिस. और तो एसिड्स की लिस्ट और बेसिस की लिस्ट, मतलब बेसिस की लिस्ट नहीं, वो तो फॉर्मूला खुद ही बना लो. ऑक्साइड के साथ कोई भी पॉजिटिव आयन जोड़ दो, दैट्स अ बेस. हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी पॉजिटिव आयन जोड़ दो, दैट्स अ बेस. कार्बोनेट के साथ कोई भी पॉजिटिव आयन जोड़ दो, दैट्स अ बेस. और ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वाई आर द बेसिस के ऑक्साइड H+1 एक्सेप्ट करता है, वाटर बन जाता है. हाइड्रोक्साइड H+1 एक्सेप्ट करता है, वाटर बन जाता है. और कार्बोनेट भी H+1 एक्सेप्ट करते हैं. कार्बोनेट के अंदर एक ऑक्सीजन होता है जो H+1 एक्सेप्ट कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, वाटर बना देता है, और पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, ठीक है. नाउ वी आर डन विद एसिड्स एंड बेसिस both. The next thing is, the next thing we want to figure out is what's a salt. ठीक है कि ये salt क्या चीज होती है. Salt is something, पहली तो चीज है कि it's a neutral compound. It's a neutral compound, which means it neither produces H+1 ions or OH ions, nor accepts ठीक है. सो इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड. मतलब एसिड और बेसिस की हमने क्या डेफिनेशन की थी, हमने कहा था कि जी एसिड जो है वो H+1 बढ़ा देता है, बेस जो है वो H+1 कम कर देती है. सॉल्ट ऐड करने से nothing would happen to the H+1 and OH ions, ठीक है. nothing would happen, it's not going to affect it. यानी ना उसके पास H+1 होगा, ना उसके पास OH-1 होगा, वो कोई इफेक्ट नहीं होगा. अच्छा, but the proper definition is that salt is formed, it's formed when an acid is neutralized. अच्छा, न्यूट्रलाइज्ड वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि when an acid stops behaving as an acid. Well, when an acid is incapable of producing H+1 ions, that's when it stops behaving as an acid. So how is a salt produced? ये आपका acid है HCl का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी ये एज एन एसिड एक्ट कर सकता है. क्यों एक्ट कर सकता है? क्योंकि इसके पास H+1 है, ठीक है. अगर मैं इस एसिड में से H+1 आयंस खत्म कर दूं और उस H+1 की जगह कोई भी और रैंडम पॉजिटिव आयन डाल दूं, ठीक है, लेट्स से Na+1, तो सॉल्ट बन जाएगी.
क्योंकि now the acid is not capable of, क्योंकि उसका H+1 ही चला गया, ठीक है, तो उसका उसका H+1, its H+1 is gone, and so its H+1 is gone. So this is how salts are produced when an acid is neutralized. ठीक है, एसिड में से H निकाल दो ना तो काम ही खत्म, एसिड as an acid काम ही नहीं कर सकता. ठीक है, राफा, is this clear? नूर, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये ना सोचो कि Na आया कहाँ से, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि एसिड में से बस आप H खत्म कर दो. अब वो अकेला Cl- अकेला तो रह नहीं सकता, हमेशा एक नेगेटिव आयन के साथ एक पॉजिटिव आयन आता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा ना जिसके अंदर H हटा होगा, उसकी जगह सोडियम आ गया होगा. ठीक है, और मतलब सोडियम की जगह इट कुड हैव बीन एनीथिंग एल्स, इट वुड बी अ सॉल्ट, अमोनियम आयन हो सकता था. ठीक है, H+1 की जगह, या Mg हो सकता था 2+ and Cl is -1, so it would be MgCl2. So just get rid of the H and you get a salt. Same with H2SO4. अच्छा, same with H2SO4 के उसके अंदर what happens is कि उसको अगर न्यूट्रलाइज करो, न्यूट्रलाइज का मतलब है कि उसका H खत्म कर दो. You get rid of the H and you replace it with any other thing. तो Na+1 कर दो, पीछे SO4 -2 भी रह गया, so it's going to be Na2SO4. या फिर Mg कर लो, Mg is +2, SO4 is -2, तो उसके अंदर क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है. या फिर अमोनियम कर दो, any positive ion, get rid of the H, simply get rid of the H, you get a salt. ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स में क्रिस क्रॉस करोगे ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, अब्दुल्ला, हमजा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाउ इज अ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड? मिलाने Yes, sir. ठीक है. अच्छा, सो Yes, sir. ठीक है, सो वी डिड एसिड्स, वी डिड बेसिस, और हमें उनके ना फॉर्मूलाज पता लग गए. ठीक है, वी नो के व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ एसिड्स. ठीक है, ये तो पूरा रट्टा लगाना है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, फॉस्फोरिक, नाइट्रिक. ठीक है, वी फिगर आउट व्हाट आर बेसिस. के बेसिस एक्सेप्टेड H+1, they have O-2 ions, or they have OH-1 ions, or they have the third one, which is carbonate ions. These are basic. और क्यों? क्योंकि they're capable of accepting H+1 ions. और फिर वो मैंने बताया था कि अकेला तो exist नहीं करेगा O-2, तो there must be either a metal with it or any other positive ion next to a hydroxide or a carbonate. ठीक है, so these are bases. और salts मैंने explain किया कि salts are formed when acids are neutralized. मतलब acid में से आप H को निकाल दो ना और उसी जगह कोई और चीज डाल दो, तो you get a salt. That's it. So now we're going to move towards our first equation. ठीक है, remember we were doing all this ताकि हमें formulas, equations वो हम बनाना शुरू करें. So we're going to start with the first equation, equation number 1. Equation number 1 is that a metal reacts with an acid to produce a salt, and at the same time it gives off hydrogen gas. ठीक है, H2 gas. So that's the first reaction that we're going to study, and that's the first equation that we're going to learn how to make. अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा याद रखना कि there's some things that we haven't done yet. इसलिए मैं इस पे ना बस एक थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ कि मेटल के ऊपर, क्योंकि मेटल्स के चैप्टर के अंदर में डिटेल में पढ़ेंगे. Remember that metals have different reactivity. Some metals are very reactive. So metals have very different reactivity. Some are very reactive. तो उनका जो रिएक्शन होगा ना, that would be explosive. मतलब एग्जांपल है कि ग्रुप 1 metals are, hopefully everyone knows कि ग्रुप 1 metals are extremely reactive. ठीक है, they are, अगर सोडियम को रखो तो it's going to be an explosion. ठीक है, so example group 1 metals, they're very reactive.
and some are very unreactive. Like gold. ठीक है, so example is gold. ठीक है, if you know okay, gold thousands of years you take it out of a tomb, it's still gold, it doesn't react with anything. जबकि आयरन अगर मेटल है तो आयरन का मेटल जो है वो तो हवा में पानी के अंदर रखो तो वो रस्ट कर जाता है. So the point is कि just remember this, keep this in mind. हम आगे जाके जब metals का chapter पढ़ेंगे, we're going to study this in a lot more detail. And so keep this in mind कि not all metals are going to react in exactly the same ways. Reaction होगा लेकिन कुछ का reaction बहुत slow होगा. Gold का reaction almost होगा ही नहीं. और कुछ का reaction explosive होगा, ठीक है? So we're going to talk about this in detail when we do this chapter. अभी हमने equation बनानी है. So the reaction is metal plus acid produces salt plus hydrogen gas. So I'm going to pick a metal. Let's pick magnesium. And I'm going to pick an acid. Let's pick nitric acid. Nitric acid is HNO3. ठीक है, ऊपर जो list बनी हुई है ना acids की, remember you have to memorize that. So magnesium plus nitric acid. क्या मैंने explain किया था? क्या बनना है? Salt and hydrogen gas. अब hydrogen gas को ना आप पहले ही लिख दो, ठीक है? वो उसको पहले ही लिख दो, उसमें बनना ही बनना है. Don't change the formula. Hydrogen gas is H2. It has to remain H2. ठीक है? Don't change the formula. Salt किसने बताया था? Salt किसने बनेगी? Salt बनेगी when the acid gets neutralized. Acid neutralized किसने होगा? H की जगह कोई और metal ion आ जाएगा, कोई positive ion आ जाएगा. In this case, it's going to be magnesium. Magnesium आएगा, H को side पे करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा. So the answer would be the salt would be magnesium. पीछे का रह जाएगा NO3. Magnesium H को साइड पे कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है? तो और वो H साइड पे जाके क्या बना रहा है? It's forming H2 gas. So that's going to be your salt. अच्छा, अब इस salt का ना formula ठीक कर लेना. Magnesium is in group 2, so that means it's +2. NO3 is in NO3 का charge अगर याद है, it's -1. So if you do crisscross, the formula क्या होगा इसका? It's going to be MgNO3 twice. That is what your salt is going to be. So remember, in all metal plus acid reactions, you have an acid. The metal would come in, H को side पे करेगा, it will knock it out, and hydrogen gas would be produced, and the metal would neutralize the acid. उसकी जगह H की जगह खुद आ जाएगा. But remember कि you have to make the correct the formula. Crisscross कर लेना. +2 है, -1 है. So you do crisscross. This is the formula that you're going to get. Is this clear? Abdullah, is this clear? Abdullah, is this clear? Rafiq, Noor, Binahil? Yes. Yes, sir. अच्छा, so all reactions would be exactly the same. अच्छा, अगली चीज जो है वो ये कि once you have this equation, you have to balance equations. ठीक है, and most of you have some experience balancing the equations. अच्छा, बैलेंसिंग के अंदर एक पहला रूल तो याद रखो कि एक दफा अच्छा पहले जब आप फॉर्मूलाज बना रहे होते हैं ना, डोंट वरी कि यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, ठीक है? बैलेंसिंग वाला पार्ट एंड में करना, ठीक है? तो पहले आपने ना जब आप इक्वेशन बना रहे हो और फॉर्मूलाज लिख रहे हो उस टाइम पे ना डोंट वरी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ठीक है? बैलेंसिंग हमेशा एंड पे, पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज करेक्ट होने चाहिए. रिमेंबर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 है, ठीक है? तो उसको H2 ही रखो. अभी इसकी टेंशन ना लोगे, वहां पे दो एक H है तो यहाँ पे दो किधर से आ गए. आपने फॉर्मूला सही रखना है. सेकेंड है इसका भी फॉर्मूला पहले ठीक करो, ठीक है? मेक श्योर कि आपके सारी चीजों के ना फॉर्मूलाज बिल्कुल ठीक है. उसके बाद फिर ये सोचना कि आप बैलेंसिंग करना शुरू करो. अच्छा, जब बैलेंसिंग कर रहे होगे तो रिमेंबर कि इसके ऊपर ना ये इमेजिनरी ब्रैकेट्स डाल देना. यू कांट चेंज द फॉर्मूला नाउ. मतलब H2 जो है ना वो मैजिकली H3 नहीं हो सकता. You can't change the formula. ये इनके formulas हैं. The only thing you could do is you can change the quantity. कि अगर नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो you can make it 2 molecules of nitric acid. तो इसके सामने कोफिशिएंट में लिखना पड़ेगा. So that is what we are going to do. तो बैलेंस अगर करो तो there's how many NO3 ब्रैकेट में डाल के there's twice. यहाँ पे NO3 कितने हैं? There's just one. ठीक है, मतलब अगर मैं इसके NO3 के ऊपर ब्रैकेट डालूं तो या इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं. N कितने हैं? N NO3 के अंदर N एक ही है,
ठीक है, there's only one, उसके साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट डाल के पूरी चीज के साथ 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है n2 है। यहाँ पे n कितने हैं? there's only 1n, तो क्योंकि n के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो इसको 2 करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, पूरी चीज को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। एंड इफ यू डू दैट, तो हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? एक था, लेकिन अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन्स हो गए, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं? देयर आर 3 ऑक्सीजन्स, बट सिंस देयर 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है देयर 6 ऑक्सीजन्स। इधर NO3 ट्वाइस हुआ हुआ है, इसका मतलब है NO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 NO3s है, तो इसका मतलब है ये भी 6 ऑक्सीजन है। सो एवरीथिंग काइंड ऑफ लुक्स बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, इज दिस क्लियर? मेरा Yes, sir. ठीक है, राफिक है। Yes, sir. अच्छा, so we're going to do some more equations, like let's do aluminium with sulfuric acid. Now, aluminium with sulfuric acid is going to be, aluminium with sulfuric acid is going to be exactly the same. कि आपने क्या करना है, आपने metal plus acid produces salt plus hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस का तो फॉर्मूला पहले ही लिख लो जाके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसने बनना ही बनना है, ठीक है, वो पहले ही लिख लो, बाकी फिगर आउट करो। सॉल्ट किस तरह बनेगी? सॉल्ट वुड बी फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम आएगा और हाइड्रोजन को साइड पे करेगा और उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी एल्यूमिनियम और SO4, लेकिन इसका फॉर्मूला ठीक करो। SO4 जो होता है, अगर ऊपर जाके आयंस की लिस्ट देखो, इट्स -2, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में, सो दैट्स +3, तो फॉर्मूला अगर ठीक करोगे, इट वुड बी एल्यूमिनियम ट्वाइस एंड SO4 वुड बी थ्राइस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। और ये चार्जेस का लिखते नहीं है, इसको भी साइड पे कर लो, वो हमारी वर्किंग थी। सो यू हैव फिगर आउट द इक्वेशन, लेकिन बैलेंस नहीं है, यू हैव जस्ट फिगर आउट द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। तो अब अगला काम करो, अगला काम ये कि आप बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग करने से पहले याद रखना कि फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड का यही फॉर्मूला है, इस चीज़ का यही फॉर्मूला है, बस इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर से। सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 हो गए, बात खत्म। अच्छा, फिर द अदर थिंग दैट यू सी इज SO4 जो है ना, वो ब्रैकेट डाल के 3 हुए हैं। यहाँ पे SO4 कितने हैं? एक ही SO4 है, तो इसको भी 3 होना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 हैं, लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 6 हाइड्रोजन होंगे, तो इधर भी 6 कर लो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस इज बैलेंस्ड एज वेल। ठीक है, क्लियर है सारों को? हमजा, इज दिस Yes, क्लियर? sir. यस, Bracket around Yes, sir. SO4. ये वाला जी सर, फर्स्ट इक्वेशन में can we make bracket around SO4 and write 3? नहीं, वही इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते। मतलब ये कह रहे हो ना कि आप कह रहे हो कि इसको हम SO4 को ब्रैकेट डाल के 3 क्यों नहीं कर देते? Yes sir. वही मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना, दैट इज, उसको छेड़ना नहीं है। H2SO4 का फॉर्मूला जो है वो यही है, ठीक है। यू कांट चेंज, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको H3SO4 नहीं कर देना, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऑरेंज ब्रैकेट डाला हुआ है, स्क्वायर डाला हुआ है कि रिमेंबर यू कांट टच द फॉर्मूला। एक दफा फॉर्मूला बना लिया ना, कोई भी फॉर्मूला किसका बना था? क्रिस क्रॉस करके बना था ना, मतलब H+1 था और SO4 -2 था ना, तो जब हमने शुरू में एसिड्स के फॉर्मूलाज बनाए तो वो H2SO4 बन रहा था। तो वंस यू हैव मेड फॉर्मूलाज यू कांट चेंज देम, ठीक है। यू कैन नेवर, यू शुडंट इवन टच देम। सिर्फ उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो कि जी 3 मॉलिक्यूल्स हो गए H2SO4 के, 4 हो गए, 2 हो गए। नूर, इज दिस क्लियर? Yes sir. अच्छा, so everyone, you still have 10 minutes. Try and send me 2 equations. One is magnesium plus phosphoric acid. बल्कि एक ही अभी भेजो, मैग्नीशियम प्लस
फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसमें आई सेंड यू द, ये मैं बोर्ड का लिंक भी सेंड कर रहा हूँ जहाँ पे वो सारे लिखे हुए। 1 सेकेंड, कैन व्यू, यस। अच्छा, मैंने बोर्ड का लिंक सेंड कर दिया। अगर वो आयंस वगैरह की लिस्ट वगैरह वो ऊपर लिखी हुई है, इस बोर्ड पे चले जाओ। सेंड मी दी फुल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर द फुल बैलेंस्ड इक्वेशन। और बेशक गलत बनती है अभी, बस ट्राई करो।